the business tier, the third tier. Very good. It handles the interaction, and um, okay, it Very good. Next has tier. to like transport the data between them, something like this. करेक्ट करेक्ट सपोज दो मशीन है आपका क्लाइंट है एंड द सर्वर इज देयर राइट see what is the task of a web tier that is they are calling that you are transferring a data from web tier to the business tier that is nothing but your server right so how the task is happen with the help of RMI technology nowadays it gets changed with the web server services and so on so this is your client application right so whatever you do the request वैसे के वैसे request आपको server के पास जाती नहीं है right so it converted into the डिक्रिप्ट ये कन्वर्ट होती है एनक्रिप्ट होती है then that is done by the stub will transfer the request through the remote reference layer through the transportation layer then when it comes to the comes at the end of the server applications it is again converted into the request server के पास वो request जाती है then server will respond on that request and again the same process will be transferred and this transformation is performed ये यहाँ पे आपका web tier काम करता है it help for transferring a request from client machine to the server machines right and what exactly business tier do what exactly business tier do Ma'am, it manages the transactions and security, and it also hmm contains the business logic of the application. okay perfect so what it do it exactly do process your business logic right it do process your business logic जैसे आपने इसमें देखा था what Amazons के लिए so which as per your request what is a business कौन से स्कीम के ऊपर क्या ऑफ है क्या नहीं है all these are the business will be handled by your business tier and while handling this business processes business tiers need to interact with the databases right or other legacy other type of software other processes so whenever this request is when they want to do the request or when they want to serve to the required some data informations they will go to the enterprise information system that tier EIS tiers then and EIS tiers will be interact with different databases and different third party process they fetch the data and send a request to the business tiers so when they send a request to the business tiers the business tiers also has a responsibility about to maintain the ACID property also that is nothing but it handle the transaction request it should handle the security right all these transactions all these processes will be happen with the business tiers for example suppose you fetch you want some database ka request continuous chahiye okay some records you want some records so every time do you you will inform to the EIS will be fetch the request and send back to the business tiers एक ही रिकॉर्ड लेट से आपको 10 टाइम चाहिए 10 ऑपरेशंस के लिए चाहिए so if you do this like this way your business tier interacting with the EIS data interact with the database and fetch the records again you require some information so again you require the same for example same database के साथ interactions कर रहे हो you require the same data so again business tier do the request to the EIS will be fetch the data and send a request to the business tier so such type of task is very time consuming so what the business tier do once it required data it fetch it from the database and it keep it into the temporary storage right and all the operations till your आपका transactions पूरा बंद नहीं होता है till that time your the business tier will maintain that temporary database so वो जब temporary database आप load करके रखते हो there is a probability another client is also required the same database another client is required to perform the same operations then again you need a logic you need the business tier need algorithms कि उस data को locking कैसे करके रखना है और कितने time तक lock करके रखना है right so and once यदि locking or how it should maintain the ACID property
right? That all I can say the operations or responsibility is the business tier. Fine. So business tier business tier is also looking for the all transaction management as well as the security management also. Fine. And with reference to this, we have looked after the client tier little bit detail yesterday. And in the client tiers, we said how many type of client tiers are available, how many types of Java clients are available. We said we are having web clients, we are having applets, we are having application client, we are having enterprise beans client, enterprise information systems clients are also there, web services are also there, and multiple tiers are also there, right? And web client is nothing but we have discussed it is just as a web pages, it is just as a web pages. As per the requirement, your dynamic web page get displayed, right? Applet is nothing but it's a small programs which is now it is run by the Java, not it run by the client. Applet रहता है, applet will be called the that to the web tiers and the information get it extracted. But almost applets it are outdated nowadays. Then applications client is nothing but your programs, or you can say that your software which you are developing, GUI of your software, that is called as an applications client. Enterprise Java Beans clients are nothing but when a business to business interaction is happening. For that, I given you the examples. When you do the booking, let's say for example, booking कर रहे हो, ticket booking कर रहे हो, so you interact your when you enter the credit card informations, the systems, the business layer wants to interact with the another business tier. Banking का business tier के साथ उसको interactions करना पड़ता है to identify whether the information और उसका client की बराबर है या नहीं है, whether they have the sufficient balance or not. For that process, your that time, in that case, your enterprise Java Beans itself become a client. Enterprise Java Beans are nothing but it's a business logic. It's a nothing but you can say अभी के लिए broader view में लिख लो, it's a business logic model, right? So that is another client. Then we have think about the enterprise information system clients. मतलब क्या है? For your systems, you need some data from the other systems. For examples, I have developed systems as a examination systems. When I develop examination systems, I need a data from standardized अदर लीगेसी सिस्टम. दैट मीन्स यूनिवर्सिटी के एक फाइल होगी, सिस्टम्स होगा जहाँ पे अपने वहाँ एग्जामिनेशन रूल्स, एग्जामिनेशंस के सब प्रोसेसेस लिखे होंगे. सो माय एप्लीकेशन नीड इंटरेक्शंस फ्रॉम दैट database. So what it do? It directly with the help of enterprise information systems client, they interact with this third party software. And the web services, all of you may be aware of the SOAP, REST, WSDL, RDF, RSS. These are nothing but the web services. Web services, what do you mean by the web services? What do you mean by the web services? What do you mean by the web services? Yes. What do you mean by the web services? Anyone? Ma'am, maybe the services offered by the World Wide Web. Okay, yes, definitely. Offer by क्यों चाहिए? क्यों पिक्चर में आई वेब सर्विसेज? कहाँ से शुरुआत हुई? Have you heard about SOAP, WSDL? सुना होगा ना? इम्प्लीमेंट किया है कहीं? सिलेबस में है अपने? शायद इसी में J2E में करना है आपको इम्प्लीमेंटेशन उसका. एनीवन? निखिल? क्यों वेब सर्विसेज आई? सी डिफरेंट लैंग्वेज. हाँ, यस, सॉरी, यस, सॉरी, यस, बोलो. So, like you said, REST. So there are REST APIs. So they provide data to the client application in JSON format. So yeah, that is a maybe, technical thing, that's beta also, Kushal. Perfect. so But क्यों maybe आई? something like
like it provides the data which is available in the database to the client in some format which is which can be processed on the client side. With the database, right? Isn't it? EIS layer is supposed to be interact with the different databases. Nowadays, even RDBMS is also not there. So multiple schemas are there. मतलब, you know, you are storing the information sometime in the text file, sometimes into the RDBMS, sometimes some MongoDB केस के साथ कहीं पे भी आप सेव करते हो. तो you require a मतलब multiple schema लगता है ना आपको. That is also done by your EIS systems. राइट. सो डेटाबेस से फेच इंफॉर्मेशन करोगे, वो टेक्निकली आपने जो बोला है वो परफेक्ट है, लेकिन क्यों मतलब वेब सर्विसेज व्हाई इट कम्स इन पिक्चर एंड व्हाट एग्जैक्टली इट डू? सिंपल वन, वेरी सुपरफिशियल वे में बताती हूँ, जब हम डिटेल में जाएंगे तब ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊंगी. सी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर यूज्ड for the development of your web applications. You may use Node.js, you may use AngularJS, right? And these heterogeneous applications need to be documented, right? Need to be communications with each other. There should be a common platform that will allow to, manipulate to this communication ability. And this communication ability is managed by your web services. And how to do it? That question you have just now explained कि कैसे वो पूरा execution होता है. So in the superficial way, you can say a web service is nothing but it is used for communications of the different platforms which you are using for your web development process. Fine. And it is performed as communication is happen again at the client, Java client tier only. That's why it has become our client tiers. It is it comes under your client tier. Fine. So these are all the J2EE clients that we have discussed yesterday, right? And now the next tier is your web tier. So what exactly the web tier tasks perform? It performs for dynamic generation of a various format for the client. It collects the input from the client and return appropriate results from the components in the business tier. It controls the flow of pages or screen. It also maintains the user data sessions, right? And performs some basic logic and wholesome data temporarily for the business tier. Fine. और यहाँ पे आपके two type of components work at the web tier, and all of you aware that आपने काम किया होगा JSP and the servlet. Okay, JSP and servlet come here, the technology come over here at the web tier part. Fine. वेब आई ने क्रिएट की थी ना सर्वलेट में. Yes, ma'am. हाँ, that is nothing but you are managing the web tier, web containers. कंटेनर मतलब क्या बताती हूँ वो भी. फाइन. सो दिस इज टिपिकल बिजनेस का वेब टियर का कंपोनेंट्स रहता है. यहाँ पे आपका वेब ब्राउजर है, ब्राउजर से कनेक्ट गेट अ रिक्वेस्ट टू द योर JSP सर्वलेट and then web tier will transfer this request to the web components, right? The business tier is responsible for business code. Here logic, it receives the data from the client, it necessary perform all the informations. Sometimes it needs to send some data, मतलब store database करना पड़ता है. That time it send a request to the EIS layer. Okay. So and it store the data, it retrieve the data. This task is performed by your business tier. और यहाँ पे आपकी EJB टेक्नोलॉजी काम आती है, Enterprise Java Beans. Fine. So EJB work over here. And to perform this task, you are required to work with the JNDI, that is the Java name services are required to work on. Fine.
So this is enterprise Java Beans tier. Business tiers is nothing but what it do. This tier contain the EJB server which stores and manage the EJBs. EJBs Java EJB servers and its container and so on. वो बताती हूँ बाद में आपको. What task exactly EJB ये जो business tier है, what exactly task it do? It do resource pooling, distributed object protocols, thread management, state management, process management, object persistency, security, and deploy time configurations. These are the keywords? Just superficial way में मुझे बता दो इसका meaning क्या क्या है? What exactly it is? Resource pooling मतलब क्या? Resource pooling? Yes. Just superficial way में बता दो, detail में हमको देखना है वो how the things are happening, right? So just tell me what do you mean by the resource pooling? What exactly you do? Yes? Cloud computing पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. Ma'am, like all the resources are at one place for all the components to use, like something like that. करेक्ट. इसलिए मैंने सुपरफिशियल बेस बोला. और रिसोर्सेस में क्या क्या आएगा आपका? डेटाबेस आएगा, आपके सब अदर बिजनेस टीयर के लॉजिक आ सकते हैं, अदर लीगेसी सिस्टम्स आ सकती है, राइट? सो दीज आर नथिंग बट इवन डेटाबेस में ही पढ़ा होगा आपने कि कैसे वो डेटाबेस के रिसोर्स पुलिंग किया जाता है. Isn't it? Even you work with the cloud applications, but what you said it in superficial way, we can say it is nothing but the resources which you are required for processing the operations. It may be the database, it may be some other business tier, it may be other legacy systems that should be managed by your service layer, right? Then next is distributed object protocols will be managed. Just imagine you your banking के server अलग अलग जगह पे रहते हैं, right? So how it perform the transactions? ये 2PC protocols database में पढ़ा होगा आपने. When the transaction is happen, how the things are getting blocked in distributed way. पढ़ा हुआ है 2PC protocol? नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? No idea, ma'am. No idea? Okay, distributed computing ही नहीं हुआ है. ठीक है. So 2PC अभी के लिए ये करो कि how it the in short कैसे बताऊँ आपको? See अभी के लिए when distributed systems is there, how to maintain the object at the distributed locations. Banking servers are available at the different geographical locations. So how you manage your transactions? If you fire a transaction at one place, right? You and similar way, another way you again in between when you do these transactions, for example, the network fails, then how the things should be happen? How the transaction is rolled back, or when it is up, then how the things will be मतलब processing. क्योंकि एक transactions communication होते समय it has to interact with the multiple servers, it has to interact with the with multiple resources. So when it interact with the multiple server, आपका transaction एक जगह से दूसरी जगह पे सेकेंड सर्वर के ऊपर आपने भेज दिया है और सेकेंड ऑब्जेक्ट की तरफ भेज दिया है एंड नेटवर्क फेल्स. सो ऑब्जेक्ट है जो आपका ट्रांजैक्शंस भेज चुका है, what he said, what he is expect, what the object expecting, the transaction should be get it complete and the response should be sent back to him. Till while the transaction is occupied, right? It is block probably. हाँ, वैसे चलता नहीं है रियल लाइफ में, उसको asynchronous communication में डालते हैं, but it is blocked. So it should know कि in between the transaction fail हो चुका है, or after certain time being when the transaction gets start, then it has to मतलब process in a normal way. So these processing is happen in a distributed object protocols will be taking care of that. Fine.
thread, it's a very superficial way I'm explaining you, but when we go for the EJB, that time we will see all the details, how the things are happening over there. Thread management, multitasking, then state management. While performing this task, the every objects need to maintain the states. It's in idle state, it is in the, for example, it is into the process states, then again go back to the idle state. So all these state management need to be maintained, okay, for locking the process, locking the object, right? So that is also taken care by your EJB process. Process management, object persistency. Some objects are working as a permanent data, उसके साथ store रहता है active. Then you persistent object or active object करके सुना होगा, that you have to be taken care. यहाँ पे security management किया जाता है, and the deployment time configuration process will happen at your EIS layer. Fine. ये typical picture है business communications का. Java, this one entity, यहाँ पे देखो business tier में entity beans, ये जो types बोले ना कि state management के लिए, entity beans, session beans, message driven beans, these are the beans which is taking care of your session that state management of your of the transaction. Fine. And then interact with the EIS layer. Fine. So this is your EIS layer. It is nothing but it do the communications with the resources which are not the part of your J2EE. So it may be the enterprise resource planning, database systems and other legacy systems and so on, right? ठीक है. Now to process this, these are the different technology we are using and we are learning for this syllabus, for the J2EE. अभी के आपके syllabus में we are learning Java Servlet in details, JSP, EJB, okay. बाकी का JDBC is also there. ये जो मैसेज सर्विसेज और JNDI डिटेल में नहीं है, बट दीज आर द मेजर फोकस्ड ऑन दिस फोर पॉइंट्स. जावा सर्वलेट, JDBC, EJB, sorry, as well as the JSP. Okay, so these are the technology. Fine. So these are all called as a components. Fine. Now, see, these components जो आपने डेवलप किए हुए, it need to communicate to the lower level, right? They need to communicate to the lower level. Fine. So in J2EE we are having additional entity or additional what I can say, क्या बोलूँगी इसको, one additional facility that we can call, that is called as a container. That is called as a containers. पहले हमने अभी तक क्या देखा, all these are all जो 4 tiers के अभी तक हमने देखे all components, right? We have go through all the components. And what is the job of a components? Job of a component is see, what is the job of a component? Job of a component is nothing but write a function, write a modules to provide a functionality for the typical business operations, right? Provide a functionality to the business operations. Now this, after all, you need to do the communications with the lower end, and this communication is happen with the help of, you can say, container. ये देखो यहाँ का picture है. With that, this is your Java application. This is your Java application. All these J2EE components are available. Okay, they need to do the communication at the different services which are available over here, right? J2EE, all the services. What are the different services जो अभी हमने अभी तक discuss की कि ये this tier do the security, this tier do the transaction management, right? To perform these services, we need to take the help of one additional layer, and that is called as a J2EE container,
right? That is called as a J2EE containers. So read it, what exactly the containers is. एक बार read कर लो. Fine. So what they say in Java EE application, the container provide the execution environment for the Java EE applications. Fine. So these are your containers. You can say ये आपके Java ये था components थे. With the help of containers, you are communicating with the different services. Fine. So this container are interface between the components and low-level platform-specific functionality that we have seen just now. Before a web component, enterprise bean applications client components can be executed. It must be assembled in J2EE modules, which is deployed into the containers, and they provide these services. Security जो अभी तक हमने पढ़ा वो security, transactions, persistency, concurrency, availability and life cycle management, right? ये services explain की है जो हमने अभी तक discuss की है, वो सब services are there, right? And what are the different types of the containers? The container types are two types are container, web container and EJB containers. Okay, they are interacting with the Java EE server, Java Enterprise server. Web container as well as the EJB containers are there. Web.xml यहाँ पे आया था आपका, right? So web container is used to manage it. So what exactly the web containers do? The web containers is also known as a servlet containers. It is responsible for managing the life cycle of the servlet, mapping a URL for a particular servlet and ensure that the URL request has been correctly accessed. Web.xml जो आपने किया हुआ है, that is nothing but your web containers. Fine. A web container implements the web components, contact of the J2EE architecture, okay, specifying a runtime environment for web component that include the security, concurrency and so on. Fine. In short, ध्यान में रखो जो J2EE के लिए किया था components that is implemented by using the web containers. Now the enterprise, similar way you are required the another containers for implementation of the EJB components, and that is nothing but that is called as a EJB container. Fine. And it performs the following tasks: transaction management, security, lifecycle, remote connectivity, database connection, pooling, naming services. These are all performed by your EJB containers, right? That is the end of your first topic, Java architectures. And the student, those are क्या बोलूँगी, हाँ, इसके ऊपर एक हमेशा क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स, देयर विल बी इन एग्जामिनेशन हमेशा एक क्वेश्चंस रहता है, हमेशा मतलब वन प्रोबेबल क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द J2EE आर्किटेक्चर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Fine, but more think from the
coding point of view. Agree? So shall we start the coding now? J2E का coding start करते हैं? Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. Shall I give you the directly problem statement? एक second. So we start the technology now. यहाँ का है ओके. JDBC के PPT बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोगों को पता है. We will directly start with the applications part. ये मेरी असाइनमेंट लिस्ट है. आई विल मेल इट टू यू ऑल्सो. एंड इफ़ यू वांट, आपको स्टेप बाय स्टेप चाहिए होगा तो वो मैं वर्कशीट जैसे आपको करवा के देती हूँ. एक सेकेंड ना. इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे. 1820 बैच. आई विल डू दैट चेंजेस, राइट. ओके. सो पहले हमको क्या करना है फॉर JDBC के लिए. दिस इज कंसिडर, these are the tables, right? Author and the book table, right? And the relationship is many as to many, right? Book table is having these attributes: book ID, book name and book price. And author table is having the ID, author name, this one, right? You have to perform these tasks on your, यहाँ तक करना है आपको. This task: write a JDBC programs to display the book name, author name and price of the book, right? Directly ऐसे न करते हुए we will start with some warm-up programs. We can say write a programs to display the some warm-up program. Write a program to display the content of a book. Let's say पहले थोड़ा वार्म अप प्रोग्राम्स एंड देन वी विल मूव ऑन द सेकेंड वन जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे. टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ बुक. ये आपने किया होगा लास्ट सेमेस्टर में, राइट? सो शैल वी राइट डाउन दैट प्रोग्राम्स. राइट द प्रोग्राम्स टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ बुक, right? And what is the, always please everyone please create these tables and we will write it down the programs to display the contents of this book. And those who will through these programs, they can move on to the second program, right? Okay, let's start. Can you do it? Simple one, पहला वाला कर सकते हो ना? अरे कोई जवाब दो, हाँ या ना. Hello, are you there? So, I'm only display वाला, right? हाँ पहले डिस्प्ले वाला करो ना, फिर उसके बाद आगे जाएंगे. ओके, जस्ट क्रिएट अ बुक टेबल एंड ऑथर की वैल्यू ये करो. एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब कोई एडिशनल हेल्प चाहिए होगी, जिस जिसको चाहिए होगी, प्लीज टेल मी. आई विल प्रोवाइड यू द वर्कशीट फॉर्मेट कि क्या क्या आपको टास्क करना है वहां पे. ओके, so are you comfortable with this? Pavit,
पहले Yes, ma'am. डीपी चेंज करते रहा, मुझे देख के मुझे भी नींद आ रही है. Okay, ma'am. ओके ठीक है. मैं करती हूँ, तब तक आप ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ा सा एडिटिंग करना है मुझे वो वर्कशीट के ऊपर. वो वर्कशीट एडिट करती हूँ और आपको भेजती हूँ. Ma'am, so हाँ, should this be a simple Java console application or like a servlet or something? नो सर्वलेट कहाँ बोला है मैंने, जेडीबीसी का रिवीजन बोला है ना. इस दिस वीक वी विल डू द जेडीबीसी रिवीजन, राइट. क्योंकि Okay, हमको जेडीबीसी के अलावा हमको चलेगा ही नहीं ना. तो मतलब थोड़ा जस्ट रिवीजन अबाउट द जेडीबीसी एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द सर्वलेट. okay, ma'am. फाइन. हाँ, देन जेएसपी एंड सो ऑन. Okay, ma'am. ओके, सो यू कैन प्रोसीड. मैं वर्कशीट को चाहिए, मतलब वर्कशीट भी अपलोड कर देती हूँ इसके ऊपर. Java code.
फील्ड्स आर सी, एक मिनट, हाँ फील्ड्स बताती हूँ. फील्ड्स आर बुक के लिए बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस एंड ऑथर के लिए ऑथर टेबल्स के लिए ऑथर आईडी, ऑथर नेम एंड ईमेल आईडी. दैट्स इट. एक्सक्यूज मी मैम. यस, बोलो. मैम टेबल में कोई वैल्यूज ऐड करनी है, सिर्फ एम्प्टी ऑफ छोड़ना है? कोर्स. ऐसे कैसे? कितना कितना ऐड करना है मतलब? वो 2 4 5 रिकॉर्ड ऐड करो ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा. ओके, सो यू नो आई हैव अपलोडेड ओवर देयर. हाँ, मुझे एक बार प्रोसेस बता दो क्या कर रहे हो. मतलब एट द एंड आफ्टर हाफ एन आवर आई शुड नॉट नो कि क्या क्या चल रहा है. राइट, सो प्लीज एक्सप्लेन मी द प्रोसेस. कोई भी बता दो कि व्हाट एग्जैक्टली डू. आई हैव अपलोडेड द वर्कशीट, राइट. क्या एग्जैक्टली करना है, क्या कैसे करोगे. जस्ट गिव मी द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशंस कि हाउ यू विल डू इट. आर यू यूजिंग नेटबीन्स? आर यू यूजिंग नेटबीन्स और इक्लिप्स? क्या यूज कर रहे हो? हेलो, पता नहीं क्या हो गया है, सब लोग क्यों नहीं बोलते हो. वंस अपॉन अ टाइम यू पीपल आर वेरी एक्टिव इन द क्लास. ऑफलाइन मोड में है, क्या हो गया ऑनलाइन मोड में? तो स्टेप्स बता दो ना मुझे. सो एवरीवन विल बी वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, राइट. बता दो क्या कैसे स्टेप्स, क्या क्या करोगे. यस, just explain me all the steps. What exactly you will do. Anyone, Jatin, Kanish, Jatin, क्षितिज बताता है हमेशा. निबीर करके कौन है? निबीर. निर्मित बताता है. निखिल इज ऑल्सो देयर एक्टिव. ऋषभ आप नहीं बोले. ऋषभ सचदेव, ऋषभ, श्रीवंश, उमंग, राहुल नायर. राहुल गोयल ने एक बार बताया था, इंटरेक्शन हुआ था. निश्मिता
even you just बता दो मुझे. So I have confidence you are working on the proper direction. Sukanya, मैम कोड में क्या क्या करना है या फिर जस्ट लाइक just अभी retrieve करो ना, पहला simple programs करो, then we will make it हाँ as a little bit complicated, right? अभी तो simple करो, पहले just एक warm up exercise तो कर लो कि कहाँ पे आप retrieve कर रहे हो, और वो मुझे confidence आएगा कि आप बराबर चल रहे हो. So I don't want 2-3 people are working only, everyone has to work it, right? Coding करोगे तो enjoy करोगे. शुभित आ गया क्या? सो के शुभित, शुभित, व्हाट हैपन? सिर्फ अटेंडेंस के लिए मत आओ, कोई उसका कोई मीनिंग नहीं है अटेंडेंस के लिए आने के लिए. See, if you are sitting idle, it doesn't make any sense. फालतू में आप भी सुबह जल्दी उठोगे और काम पे लगोगे. Yeah, Jatin, you will do it, but how you will do the connectivity? I want the basic information. How if I want to start with the NetBeans, what is the process? So everyone will be on the same track. So what exactly the task you will do? First, we'll import the required packages. हाँ, तो वो कौन से हैं? क्वेश्चन लेट Java. अदर लेट क्वेश्चन को बाकी के लोगों को बोलने दो, जो क्लास में नहीं बोल रहे हैं वो उनको बोलने दो प्लीज. Okay. हाउ द JDB वो इंपोर्ट तो करोगे, लेकिन आपको करना है वेर यू विल लोड यूर ये अपना MySQL ड्राइवर, हाउ यू गेट कनेक्ट विद द इन NetBeans, वेर यू विल डू द कनेक्टिविटी, वो कहाँ करोगे? Okay, Jatin, I am you share your screen. I am giving you the right, and just show it to NetBeans के ऊपर डेमो बताओ सबको. You take a control. I will share the screen. So what you are using, Jatin? What you are doing? What you are doing? ठीक है, आप Eclipse यूज कर रहे होंगे तो Eclipse के ऊपर शेयर करो. All together everything is same. किया हुआ है, शेयर किया हुआ है कंटेंट्स. So who just share it your screen and show it to all कि how the things are. Okay, yesterday only I told you कि you have to come up with the preparation of your machine. कौन बताएगा? देवांश, you will share your screen. Who will share the screen? Who will share the screen? Who will share the screen? Any volunteer? Shubhit? Ubang? Jatin, you can put your mic on, huh? Put your mic on and have a discussion. Everyone, please. पहले ही वो पूरा अपना ऑनलाइन होने के बाद वी डोंट हैव ए मतलब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो प्लीज पुट योर माइक ऑन एवरीवन प्लीज. Yes, who is interested to show the things? Not done, Umang. So my answer is okay. Who was prepared with the with their machines? So you can show the demo. Rishabh.
ऋषभ, अक्षय लोंडे, देवांश अग्रवाल. Ma'am, I'm still setting up my NetBeans. There's a error going on, so I need to re-download it. क्यों? मैंने कल ही बोला था ना, कल के लेक्चर के लिए प्रिपेयर करो, करके रखो मशीन. मैम करा था, वो पता नहीं कोई सी ड्राइव में डाला था मैम, एरर आ गया वहाँ पे, तो वो बोल रहा है कि या तो री-डाउनलोड करना पड़ेगा या ठीक है, करो, जल्दी करो, 10 मिनट देती हूँ आपको. Yes. हाँ, करो. Anyone who is interested, please raise your hand. Those who are really want to show the demo. Okay, सबको टाइम देती हूँ. नेटबिन्स एंड ये MySQL कनेक्टर डाउनलोड करो. Okay, I am taking a break for 5 minutes. आप तब तक डाउनलोड करके रखो NetBeans and MySQL connectors. Where you need to download वो पता है आपको? See, you have to download it from the. बताने की जरूरत है नहीं है, फिर भी बताती हूँ. This is it my एक मिनट में. See down ये MySQL connector, download it from this site. HTTP प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वहाँ पे होगा. Go to this site, download the MySQL connector. Select उसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करो. That is more helpful. So I am taking a 5-minute break. Meanwhile, you people please go through the NetBeans और उसका डाउनलोड करके रखो. Make your machines ready. And how they are connected to each other. Yes, there is a relationship between different types of stakeholders. That means if you consider the internal stakeholder of the education system, stakeholders can be student, stakeholders can be faculty, okay. Stakeholders can be admin staff, supporting staff, as well as some. Instead of stakeholder, we require the other things also, the machine, the materials. So they are connected to each other. And what is the objective? What is the objective of education system? To spread the awareness or to deliver the good quality contents to the student. Clear? So those we have discussed different examples. Similarly, if you consider the human system, we know that there are very different systems, nervous system, circulatory system, and so on, and they are orderly connected. And what is the objective? To perform the specific function, right? So just now, the definition is the system. System is
Hello? I'm audible now? Yes, ma'am. हाँ, कौन बताएगा? सात्विक, you want to show? I have it ready, but I'm a little unsure about putting the values into the database. It's okay. Show me the procedure. I don't want the execution of a program. I want a complete, I want step-by-step procedures, how you will proceed. Someone, Okay. okay? कौन चाहता है? हाँ. Share your screen. प्रोग्राम्स नहीं चाहिए मुझे, पहले के स्टेप्स चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन एंड हाउ द थिंग्स विल बी Basically, I just put the connector here. तो उसके पहले कहाँ से कनेक्टर डाउनलोड किया, व्हाट एग्जैक्टली यू डू, वेयर यू नेटबीन्स पुट. के अंदर ही था. नेटबिन्स के अंदर नहीं रहता है, आप उसको आपने सेट किया होगा लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर में. लास्ट ईयर सेट किया हुआ है हाँ, एंड इट तो इज वो इन बताओ ना, नेटबीन्स. वो बताओ कहाँ से किया था, कहाँ से किया था, वो चाहिए ना बेटा. सब सब बेसिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना. सो फ्रॉम सो वेयर इट इट्स इज. इन वही विंडोज के नेटबीन्स के अंदर ये ये ऐसा फाइल आपका डायरेक्ट. सेट हुआ हुआ है, राइट? हाँ या हाँ. So if I want to download it from fresh, where you will go, where you will download, and how you will in NetBeans, how you will get connected, right? या That I want. Anyone, those who have done it, please see. It's just discussions. यहाँ पे किसी को कुछ you know, just want to share your knowledge with the other students. और मुझे थोड़ा समझ में आएगा कि आपका कहाँ तक हो चुका है. अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना आपका हुआ है, क्योंकि वो सी राइटिंग अ स्टेप्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर द जेडीबीसी. एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू द उसका पहले ड्राइवर लोड करो, फिर कनेक्शंस करो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स में. यू टेक द डेटा, रिजल्ट ऑब्जेक्ट विल डिस्प्ले द इंफॉर्मेशंस. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर्स है, राइट? सो मुझे सिर्फ एक कॉन्फिडेंस दे दो आपको कहाँ तक आता है. दैट्स इट, दैट आई वांट टू नो. और जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा. आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ योर क्लास. Otherwise, if we consider everybody, in that case, quality will 100% hamper. Okay, so for that purpose, if it is any type of system, whether it is an education, human, as well as the computer system, yes, you have to define the boundaries according to your system. So if you consider the education system, yes, I have decided some the score boundary. That means if the student scored greater than 60%, he will only eligible for the candidate. He will only eligible for the course. Otherwise, he will not. Similarly, if yes, Shruti, the restrictions there is some. विराट डैनियल, आप बता सकते हो? Ma'am, I'm doing it right now. अगर होगा तो I'll tell. No, just steps बताओ ना. You execute the program. Program will get executed, right? Ma'am, like how to. अच्छा, okay. So, ma'am, the हाँ, so first step. initial first steps. So share your screen. कि हाँ, what exactly you will do. Ma'am, Share one your minute. screen. हाँ. हाँ. So like this, we can define the boundaries as well as the environment for each and every type of system. Ma'am, can you see it? Yes, yes. Yes, ma'am. So, ma'am, the first thing was that you you अरे make a ये new project करो and अच्छा, okay. करो So करो just करो सब कुछ. माइक्रोसॉफ्ट ये माइसिक्वल कनेक्टर कहाँ डाउनलोड किया है? ma'am, वो डेटाबेस वो बताओ, वहां से लेके आप यहाँ पे कैसे करोगे? so one make a new project, new Java project, and just name it something. हम्म. Consider the previous computer system, that is the i3 the 10th generation. So if you compare i3 10th generation and i5 11th generation, yes. Then we add library and Okay.
based on the different parameters, the processing speed, the execution We speed, add this library Okay. and all the rest. and Or before that you are having a file where in the file sections, file section में जाओ जहाँ पे आपकी लाइब्रेरी आपने लोड करके रखी होगी. Go to the file section, files यहाँ पे files में. This is your JDBC applications, right? This is your program ना Daniel? yes ma'am. हाँ, यहाँ पे आपने कॉपी किया होगा प्रोग्राम्स. कहाँ पे आपका Copy कौन सा मतलब ड्राइवर 1 second ma'am. इसमें नहीं है. The thing is, so as Swarit said just now, that हाँ, दिस इज योर इन द सर्विसेज. वाला होता है ना ये सर्विसेज आपने कॉल की डेटाबेस की सर्विसेज. यहाँ से आपको एसक्यूएल सर्विसेज मिलेगी. डेटाबेस ड्राइवर कहाँ पे कॉपी किया है? ये ड्राइवर यहाँ पे होगा. ये ड्राइवर फोल्डर के ऊपर होगा. folder. हाँ, इस केस में है ये देखो MySQL कनेक्टर. यहाँ पे आपने कॉपी करके रखा है. हाँ सर्विसेज में, वो सर्विसेज में गया रे. फाइल को कहाँ पे? फाइल में उसमें नहीं आई थिंक. SRC को एक्सप्लोर करो. हाँ, जावा एप्लीकेशंस को करो. It's only the main Only the class. applications. Actually, वहाँ पे आपका ड्राइवर रहता है. If it is not at all be copied, you copied it there, right? Okay, The ma'am. students. Which I was doing this. हाँ, वहाँ से. So it get connected with your database. Fine. Next, then you open the Java applications. हाँ, sorry. Ma'am, Proceed. हाँ. Yes ma'am, I have one. I was doing one here. Okay. So ma'am, you Open the class. Go back to the. Then you'll go back to your system. यहाँ पे जाके you open the new Java class. अच्छा वो new वाले में. Okay ma'am. हाँ. Yes ma'am. Yes. Right. This is your new Java class and where you are doing the all the processes, right? हाँ. Ma'am, here we'll have to first import all the classes. Then we have to load the driver, the SQL driver. मैं मैंने कर रखा है. मैं उसी पे दिखा दूं क्या? मैंने आधा कोड लिख लिया है. ठीक है करो चलो. So मैंने first we got this. इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हो थोड़ा सा? The reason is only one. The reason is ठीक है चलो रहने दो. for improvement purpose. Get these 5 import. We have to import these 5 drivers. ड्राइवर नहीं है रे वो. कनेक्शंस. connector. हाँ, कनेक्टर्स के लिए, कनेक्शंस के लिए. दिस इज फॉर द ड्राइवर मैनेजर. Even you can do import java.sql.star also it Star. works. So we have to import these. Then these are like the driver manager to get connection के लिए we need the location, the username and the password, and we have to store them in. Please participate. So whatever he has explained. See, JDBC, MySQL, localhost. अच्छा, आपका 3306 है क्या? Yes ma'am. 880. अच्छा, 3306. Can you anyone? Not Daniel. Daniel रुको. जो भी participate करना चाहते हो, can you please explain me the meaning of this URL? Meaning of this URL? Yes. Anyone please? Meaning of this URL? Anyone? Shruti, everyone. Are you doing your own program? Everyone please. कुछ तो बोलो यार, तब समझ में आएगा. Otherwise कुछ समझ में नहीं आएगा. Everything is a wastage of the time. Yours as well as mine. So give me the response what you are doing. The response is Yes. execution of a system. Execution of a system. So write point number 1. See who. Then the second one is semi automation. See, last year everyone worked on the on a coding part, right? The last one is
and they are participating in the coding. I am expecting you people also participate in the coding. Please answer the things that will be helpful for me as well as for you also. So please, anyone. Anyone? निश्मिता Yes, ma'am. बोलो, एक्सप्लेन करो वो जेडीबीसी का जो यूआरएल है उसको एक्सप्लेन करो, क्या समझ में आया है, आपको आता है, उसमें क्या मालूम है, व्हाट एग्जैक्टली वी डू. Ma'am, you write what See, Daniel has written here the JDBC, this MySQL and so on, right? This URL. yes, ma'am. हाँ, उसका मीनिंग बताओ, उसके जो पैरामीटर्स है उसका मीनिंग बताओ. Ma'am, one of the parameters is the port number, like which port you're working on. What is this JDBC and Mac colon MySQL suggest? Ma'am, it's the driver, like Is it a driver? Okay. uh, the Which is driver. driver? Ma'am, जो driver कौन सा बता रहा है ड्राइवर, इसमें से कौन सा कीवर्ड ड्राइवर बता रहा है? just a, ये जेडीबीसी जो वर्ड लिखा है वो क्या इंडिकेट करता है? ma'am, see, like the third key JDBC MySQL is calling for the like what driver because it's Which out one? JDBC Which one? driver. Which one? Which one? Which one? हम जो भी डाउनलोड किया था like अभी विल्फ्रेड ने दिखाया था. हाँ हाँ. And then you write the which server you're like working on localhost and then the port number. This is your local host, right? This is your port number where you are indicating you are working on the local host. Yes. हाँ, लेकिन ये JDBC और colon MySQL क्या indicate कर रहा है? And colon then you are writing this information. What it indicate? Ma'am, MySQL is the database like which you're Is working on. it? नहीं बेटा, ये आपका ड्राइवर रहता है. This is JDBC is a protocol. It indicate you are using this protocol with this server. यहाँ पे Oracle का होगा तो Oracle आता है, right? And this is your that what we can say, this is your local host. You are indicating this in these local host. मतलब यहाँ आपको ये जो database है WDI ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. WDI is your database. Where you will find this database? You will find a database at localhost 33006 port के ऊपर. Okay, and you establish a communication with the database with the help of this MySQL करके जो भी database है, ड्राइवर जो लिखा ड्राइवर है MySQL का जो भी ड्राइवर है उसके साथ आप करिए हो. सो आप कर रहे हो. सो JDBC colon MySQL indicate me the JDBC colon MySQL indicate me JDBC protocols and MySQL indicate me the what? It's a driver, right? And these the WDI indicate the database. It indicate the database and it is available with the help of these. कहाँ पे available है? With the help of this port. Fine. Go ahead again. And that's what I was trying to explain. Okay. So next, आगे का करो. Yes, ma'am. I'm trying to increase the font. 1 minute. Okay, okay. नहीं, she is explaining ना rest of the thing. Ma'am, is it better? हाँ, it's better. Thank you. So explain. आगे का कहाँ गई वो? निश्मिता explain आगे का part. Ma'am, 8 minutes. हाँ. कौन से statement से क्या क्या हो रहा है? If you want to share your screen, no problem, no issue. Ma'am, actually, I can't share my screen. I'm having some error in my MySQL, so I have to uninstall Okay, and reinstall okay, it. okay, fine, fine, fine. Anyone now मतलब she is explaining. You can also help her for the explanation of these programs, right? Simple programs for retrieving the informations from the database. With the help of these techniques, we can automate our system. We can provide the intelligence to the Ma'am, so the Hmm. form.mysql.jdbc.driver is the like the driver class.
दैट इज योर ड्राइवर, राइट? नेम ऑफ योर ड्राइवर. Yes. हाँ, वो लोड कहाँ पे रहा है? विच स्टेटमेंट इज हेल्प टू लोड दिस ड्राइवर? Ma'am, in the connection statement. Which And method? Which method? get Which connect method? get connection method. हाँ. So which Uh, statement? Which statement? In the program, which statement it helps? Ma'am, you want the line number? Line number means you explain the one by steps na, ki what it is from start from this main. Explain the process. Explain the line. Ma'am, I was going like serially, like I was about to explain, like this is the user name, it's MySQL, this is the password of the MySQL, and then you come down, and this you're just create, like you've just initialized the connection, like you just declared the connection, not initialized, declared the connection statement resulted, and then you create the connection. Like with the driver manager dot get connection method, you put the URL, user, and password, and then you create a statement using connection dot create statement. Wait. यहाँ पे try इसको catch नहीं चाहिए. If the connection is not established, then Then it would give an error message saying कहाँ so. पे करेगा? कहाँ पे करेगा? Is there any error message? No, ma'am. Which exception is handled? Then he write down exceptions. कहाँ गया? Daniel ना? क्या मैं नाम भूल गई? Sorry. Dennis ना? Write down the class. Daniel, yes, ma'am. Yes. Write down उस try के लिए. If this execution is not happen, then you have to write down the exceptions. Class not found exceptions. मैम ये वाला नहीं चलेगा, सीधा SQL एक्सेप्शन ही है, नहीं because I think देखेगा. It will take all the आपके stacks में वो store करते हुए जाता है. But explicitly right now we are at very मतलब explicitly लिखते हुए जाते हैं ना सबका. okay, ma'am, because Okay. this is हाँ. like an old code, so I just was using it again. हाँ. So write it down. First exception यहाँ पे class not found exception. उसके साथ all we will write down one by one. For try catch the class मतलब सब लिखेंगे step by steps कहाँ पे कौन से exceptions catch होंगे. So class not found exception. Fine. उसको वेरिएबल देना पड़ेगा any वेरिएबल नेम. And just either you print it that print the stack, or you just write it down system dot error dot output ERR. सिर्फ ERR डॉट रहता है. ERR डॉट println. Second is introduction. First one is organization. Second one Fine. is introduction. ओके. उस कैच का एंड किया ना? हाँ ठीक है. नेक्स्ट. यस, गो टू द नेक्स्ट. इसका ट्राई और इमीडिएट कैच किया तो भी चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट. देन One is the central objective. what will be the next statement? After you create the statement, you execute the query. डायरेक्टली एग्जीक्यूट द करे. कनेक्शन का एस्टेब्लिश किया उसने, सिर्फ लोड किया ना. ड्राइवर लोड हुआ है ना अभी तक. और कनेक्शंस. हाँ ड्राइवर connection का create, हाँ. कनेक्शंस किया हुआ है यहाँ पे. स्टेटमेंट फॉर द कनेक्शंस, राइट? इफ कनेक्शन नॉट एस्टेब्लिश अगेन Error message. कहाँ पे करे हुए? कैच कहाँ पे करोगे? फिर से विच ये मतलब लिखोगे वहाँ पे. अगेन द कैच, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड. Okay, so first one is लिखो कैच SQL exceptions. I think the third one is interdependence, right? राइट इट डाउन. Yeah. मम्मी है ना इधर नीचे कहाँ SQL लिखा है? एक्सेप्शन का. देख रहा है क्या मुझे? सॉरी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. मैम ऊपर भी वही लिखा था, आपने कहा था लेकिन 1 by 1 करो, हाँ बट करो नीचे ना. भी है. ये फाइनली के ऊपर क्यों लिखा है? फाइनली विल बी अल्टीमेटली जस्ट क्लोजिंग ऑल द थिंग्स ना. हम अपने को ऊपर वाले ट्राई के लिए कैच एक्सेप्शन के लिए अलग से कर लो ना. ठीक है, चाहिए होगा तो लिखो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. चलेगा. अभी यहाँ पे एक और कैच करना है.
यहाँ पे SQL exceptions मतलब you see this try and catch block, if you are not closing the things then then the catch ये exception erase होगा ना. हाँ, तो आपका यदि यहाँ पे कनेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए कौन रेज करेगा एक्सेप्शंस? मैम अगर कनेक्शन ऊपर नहीं होता तो यहाँ पे उसीलिए SQL क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, हाँ. राइट? ड्राइवर नहीं मिला तो. हाँ, अब कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा, क्लास नॉट फाउंड वोंट बी एक्सेप्टिंग द एक्सेप्शंस, राइट? यू नीड, हाँ, यू नीड टू another exceptions explicitly for that. Otherwise आप जैसे बोल रहे थे, you can do like this way, only one exception, SQL exception EX, और उसको प्रिंट करते हुए जाओ e डॉट प्रिंट स्टैक प्रिंट, और यू कैन से दिस एरर करके प्रिंट कर सकते हो. दोनों तरफ तरीके से चलेगा. बट ये जो कैच एक्सेप्शंस है ना, ये यहाँ आपका रिजल्ट सेट या स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं हुआ तो ये यहाँ पे कैच करेगा. यस मैम, यस फाइन. मैम. सिर्फ तो मुझे इतना ही बताना था कि हर एक के लिए अपना अपना अलग से एक्सेप्शन रहता है. इन जनरल यू कैन ऑल्सो राइट नो इशू एसक्यूएल एक्सेप्शंस EX, और वो प्रिंट किया तो भी चलेगा. ओके मैम. राइट, दोनों चल जाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट? Correct, yes. So, क्रिएट ऑब्जेक्ट. I have one question, have you studied database subject? चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं. हाँ हाँ. So Like this the connection is like statement object, right? हाँ, कहाँ पे statement object? What is the purpose of the statement object? What exactly it do? it creates and opens a connection to the data. Is it open a connection? Connection तो ऊपर open हो गया connection objects में. What exactly it do? What is the purpose of the statement object? और sorry, statement object नहीं, statement class यहाँ पे. Statement का क्या use है? I told you Like for this it helps to send the command to the database. Execute the query into the database, right? So which other statements are available to execute the query? There's statement How like many? callable statement, then prepared statement. And there are three. There's normal statement, like just statement. Then there's callable statement, and then there's prepared statement. Okay, ठीक है. So what is the difference between that? Execute, prepare statements and callable statements. What execute do? Ma'am, not execute, just normal, like just statement. Was हाँ, what I meant. अरे क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए अपने को क्या लगेगा? स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट लिखा हुआ है ना उसने, एग्जीक्यूट क्वेरी. You're asking that. Okay. So 3 statements are there along with the statement object, or 3 methods we can say, not statement. Statement object, statement class के साथ 3 methods रहती है. Execute query immediately, prepare statement which will execute and compile the query, right? And third is called as a callable statements which execute the store procedures. Fine. तो execute query के इसमें और कौन से हैं? Execute update. Correct. And then the normal execute. Okay, so when you use the execute, when you use execute query, and when you use the execute update? Yes. You use execute query when you're working on a result set, like when you want to return a result set, basically. राइट बेटा, ये सभी रिजल्ट सेट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन कब मुझे एग्जीक्यूट क्वेरी करना है, कब मुझे एग्जीक्यूट करना है, और कब मुझे एग्जीक्यूट अपडेट करना है? एक्जीक्यूट क्वेरी जब यूज करते हैं जब सिलेक्ट स्टेटमेंट पे काम करते हैं. Then execute update you use when you're like want to work with insert and update commands or delete. Okay, all DDL commands when you want to execute, perfect. That time you use the execute update. Yes, ma'am. हाँ, execute कब करते हैं? Execute like I think it's usually used for like the boolean value expected है. नहीं, multiple result set return होते हैं तब. Multiple result sets are returning from the database. That time you use execute. Okay. Right? आप क्वेरी फायर करते हो, देयर इज पॉसिबिलिटी यू आर रिटर्निंग बुक और ऑथर दोनों का टेबल आपका आने वाला है, मल्टीपल रिजल्ट सेट्स, एंड यू वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन इट. दैट टाइम यू गो फॉर द एग्जीक्यूट फंक्शंस के लिए, और एग्जीक्यूट क्वेरी ट्रांसमिट इट टू द डेटाबेस फॉर द प्रोसेसिंग एंड इट रिटर्न्स योर रिजल्ट सेट. अभी आप जो एग्जीक्यूट क्वेरी लिखोगे ना, जहाँ पे आपका क्या क्या रिटर्न होता है,
rows, columns, and all the metadata informations about the tables is written by your execute query methods. Fine. Yes. तो इसमें आपने कौन सी लिखी है? रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट? यहाँ पे कौन से एक्सेप्शन आएंगे स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के साथ? कौन से एक्सेप्शन आ सकते हैं? I'm not sure. Query. हाँ बताओ ना. एग्जीक्यूट रिजल्ट सेट यदि ब्लैंक रिटर्न हुआ तो मैं मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा? Possibility is there, you get a connections, but the data is not at all be returning. Fine. So you need to catch that exceptions also. Agree? And now he is writing, ये अलग अलग लिखना नहीं चाहता है, so we can put all together into SQL exceptions with the EX where you are writing all these processes. Fine. Yes. फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने क्या किया? हाँ, Ma'am, वाइल रिजल्ट सेट रिटर्न कर रहे हो. हाँ, रिजल्ट सेट को डिक्लेयर किया है. हाँ बोलो. so then you're basically formatting the output and getting the data like qualified. कौन सी मेथड रहती है रिजल्ट सेट के साथ? टू मैनिपुलेट ऑल द डेटाबेस, उसके लिए कौन सा रहता है? मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ. See how you will see you return a metadata. Metadata about मतलब data, sorry, metadata means you are returning the table, complete table मिल गया. Now you Yes. want to display that tables, right? Agree? So how you will fetch that information? Which method will help you to fetch the information, contents of the data of that इसके row में से? Ma'am, result set dot next. Next से क्या होगा आपका? Result set date dot next से क्या होता है? वो रो मिलेगा and then because it's in a while loop, then after it executes the नेक्स्ट next क्यों? iterated. नेक्स्ट वर्चुअल आपका जैसे आपका स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होता है, देन व्हाट हैपन? इट रिटर्न्स अ वर्चुअल कर्सर. Yes. Result set is nothing but virtual cursor which is pointing to the where it is pointing, not that row, previous row के ऊपर रहता है. Virtual pointers which is pointing to the above of your tables, right? And you have to perform the move the cursor, right? Virtual cursor positions. And by using dot next method, you do the moving of the virtual cursor positions. Fine. That's why we said while result pointer next is not equals to जब तक है, it is not equals to null, you have to perform this task. और कौन से मेथड है नेक्स्ट के साथ साथ? और कौन से मेथड है रिजल्ट सेट के साथ? कौन सी है? डॉट नेक्स्ट. Ma'am, Can I'm I? not really sure. Let ओके me. यार, इट्स ओके यार, कम ऑन, चलता है. लास्ट है, फर्स्ट है, इन बिटवीन, कैन आई ट्रैवल्स, दीज आर जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन. यू जस्ट गो थ्रू इट एंड नेक्स्ट हम जो प्रोग्राम करेंगे तब ध्यान में रखो वो. वेरी गुड. हाँ फाइन. और गेट मेथड्स से क्या क्या होता है आपका? डेटा, यू रिट्रीव द डेटा. इफ इट इज अ स्ट्रिंग देन यू आर रिट्रीविंग द गेट स्ट्रिंग, गेट इंटीजर, गेट फ्लोट, गेट डबल्स, राइट? Yes. ओके. हाँ. सो डिस्प्ले कहाँ कर रहे हो? ये डिस्प्ले कहाँ कर रहे हो डेनियल? Yes, ma'am. डिस्प्ले करना है ना डेटा. ये सब अपने को जो मैम मिला हुआ अभी है वो सिर्फ डिस्प्ले. अच्छा लिख रहे थे, सॉरी. हाँ अभी कर रहा था. हाँ वही. हाँ करो करो, वो डिस्प्ले करो. एंड देन फाइनली And they will close the connections. ओके. व्हाट द यूज ऑफ फाइनल ब्लॉक? मैम अभी कर रहा है मैम, अभी उसका अभी याद ही किया है तो I'll come to व्हाट्स द जनरल क्वेश्चंस टू एवरीवन? व्हाट्स द यूज ऑफ फाइनल ब्लॉक? that. There is nothing will be done after this. Like that's the final part you'll run. To execute the code, like it's like after trying, even if there is some sort of error also, it should just execute it. या that is Uh, जो यदि if any error is occurs, if it not exception, it is not at all be catch in the catch block, final block will be executed at before quitting the programs, your final block get executed, right? And that's why we have written here
कि you have before you exit from the programs, you have to close all the thing, result set close, statement close, as well as you have to close the connections. Consists of 4 sheets, right? So in first sheet, what are the रिस्ट्रिक्ट द यूजर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं है फाइनल ब्लॉक द कोड इज विल बी एग्जीक्यूटेड बिफोर यू आर एग्जिटिंग द प्रोग्राम. फाइन. इसमें भी ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं है डेनियल. Anyway, because we want to close it, so you want to say if it is not closed, then you will raise the exceptions. Yes, ma'am. Ki if in the end it's not closing properly, then there will be an Okay. exception raised. If exception raised, then how we will handle it? Because उसको anyway अपने को close करना ही है. Anyway, ठीक है, चलेगा. So this is the first programs. So please everyone try it out. तब तक मैं attendance ले लेती हूँ. Or rather, I have downloaded the attendance in the morning itself. 78, 80, Fine, write it down everything and try to execute it. 81. Should I stop presenting? Yeah. Yes, you stop presenting, you perform it. I am making one folder. जितना भी आपका हर एक का काम हुआ है, just upload it. So every day at end of the lecture, I just review that folder and then we will plan for the next lecture का क्या करना है. Fine. So I am making a folder. At end of the lectures, you just upload your task there. Right? What your task you have done, just inform me. 89. और यहाँ पे लिखा हुआ हेल्प है people anyone please contact me if you have मतलब इसमें जो भी डिफिकल्टी आ रही है या एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है प्रोग्राम्स, प्लीज कॉन्टैक्ट मी 1:1, so I will try to debug your programs and try to find it out the errors. 95. Okay, connecting issue जतिन, मतलब is it 97. connections कहाँ पे lose हो रहा है कि you are getting connected with the MySQL and you cannot do the other processing task. 99. Ma'am, I think he's talking about the Teams. अच्छा, Teams का connection, yeah. sorry, मैं MySQL connection में थी, sorry. Okay, sorry. Okay, so आज के फोल्डर में आप अपलोड कर दो, मैं वहाँ पे फोल्डर बनाती हूँ. 89. बाद में कोई ज्वाइन हुआ था अटेंडेंस डाउनलोड होने के बाद? मैम मैंने 8:30 को ज्वाइन किया था. देवांश. कब ज्वाइन किया था? 8:30. 8:30. यस मैम. ओके, मैम मैंने 8:10 पे किया था. तो शायद हो गया होगा आपका डाउनलोड अटेंडेंस. ठीक है, इस बार ले लेती हूँ मैं. मैं भी थोड़ा पवित्र 8:05 पहले, ऐसे आया था. ठीक है, लेती हूँ अटेंडेंस, डोंट वरी. नेट इश्यूज पहले डीपी चेंज करो. मैम हटा दी. यस मैम. एक सेकेंड. ठीक है, चलो ले अटेंडेंस लेती हूँ. 101. 102. ओके, थैंक यू. यू आर कम्युनिकेशंस कर रहे हो सब लोग. 104. थैंक यू सो मच. So just give me the attendance. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 18, 23, 28, 28 मैम. 37, 38, 40, 41, yeah, 44, 46, 48, 51, 52, निखिल था. 53, निर्मित इज देयर. निश्मिता आज आपको स्पेशल मार्क्स देती हूँ. Yes, ma'am. 59, 60, 61, 64, 69 था. 70, मैं आपको विजिबिलिटी देती हूँ, मतलब मैंने जिसको मार्क नहीं किया है ना,
Ma'am, 41 as well. Yeah, 41.